episode 11 of the series Spreading Light, where we are having conversations with people from different domains and different industries who are sharing their amazing insights and experiences that might help you not just during these times but even in the future. And today we have another really amazing guest with us, and who's going to join us in a bit. So let's just wait for a few moments. He's here. Hi Reha. Good to see you and thank you for joining. So I'm just starting. Deepak is here. Hi Deepak. Yeah. Hi, Preet. So good to be here with you on How Instagram now. Yeah. So are you able to hear me properly? Yeah, I Guys, can. Yes. okay, guys, is everyone able to hear us and watch us, both of us? Just type yes if we both are audible and visible clearly. So a few more people are here, more are joining. So Deepak, it's really an honor to have you here and see you after so long. Yeah, my pleasure too, Preet. Same here. Wonderful, wonderful. So, guys, let me introduce today's wonderful guest to you. And many of you might have known this man who's loved by many, who's loved by all. And he's known as someone as, a record-breaking and speed machine because of the, powerful impact and energy he brings in his sessions. And he's one person who doesn't get off the stage without making an impact, and he's also created employment opportunities for millions and millions of people really love him a lot. I personally besides that, so Deepak is number one best-selling author of two very amazing books which are actually considered to be the Bible of network marketing industry, which is also called as direct selling industry. So one is Be a Network Marketing Millionaire, and second is Achieve More and Succeed Faster. Deepak is also CEO of Multipliers, an amazing and renowned direct selling firm. And Deepak's story is quite amazing. He has started something from very humble beginnings. So, first of all, Deepak, a very warm welcome to our episode 11. It really is a pleasure to have you here. My pleasure too, Preet. Incredible And work you're doing, and it's such thank an you. honor and pleasure to partner you in this noble and empowering cause. Awesome. Amazing. So, Deepak, you have also been wearing many hats, and not just taking care of such a big firm in network marketing industry. You are also a high Yeah. performance coach, a motivational speaker, and I know that many people regard you as Tony Robbins of India also because you are so amazing. And so. Not many people know that you come from a very small village of Haryana. You started on a very humble note. Coming from Haryana, you took up a job, right? You took up a Yeah. job in a renowned firm, and within very short span of time, you became regional manager at the age of 24. Now, Yeah. it's quite interesting that जो बहुत लोग उस जगह पे एक पहुंच जाते हैं, तो वो छोड़ना नहीं चाहते करियर को. They feel that they have Yeah. achieved success fast, so let's sustain it. But that's exactly where you took a chance and you Right. stepped into network marketing and direct selling. So would love Yeah. to hear your story. And अच्छा, आपके लिए सवाल आने भी शुरू हो गए हैं, दीपक. Okay. So Deepak, Deepak is CEO of Multiplier. Somebody was asking about the name of the company, and we'll talk more about that. And so Yeah. Deepak, all goes to you. Would love to know your story, how this success story happened. Uh, See, from my childhood days, I had this dream that it's not. I don't know if you call it a dream, but we had seen a little financial crunch in the family. My mom was working, and she was, single-handedly kind of managing the entire house. So first of every month, she used to get salary. Fifth of every month, it used to get over. And I thought, you know, whenever a child is born, it's the happiest moment for the parent. So my parents, with great joy, they brought me into this world. And if I cannot bring joy back to my parents,
think, I mean, I'm somehow not fulfilling my duty. So one of the ways I wanted to do that was मेरी family को financially कोई problem नहीं आना चाहिए. I mean, whatever I have to do, I'll do it, but I should take care of that. And I thought whenever I get a chance in my life, I will do something that I will, give everything in the world to my mom. So like she's like a living god to me, and I feel she has been my inspiration. So I thought कुछ भी करना पड़े करेंगे, and I have been looking for ways to do that. And when we were small, no, तो हम लोग government quarters में रहते थे. And quarters में is like ground floor is a different family, first floor different family, second floor is a different family, and वो छोटे छोटे घर होते थे, 500-800 square feet. When we used to cross that lane, and then there were bungalows and कोठियां वोठियां हो जाती थी. So every time I used to go outside, and मैं मेरी मम्मी से पूछता था, who are these people who are staying in these, ये कोठियों में कौन रहते हैं? तो मेरी मम्मी बोलती थी कि वो बड़े लोग हैं, हम अलग हैं, वो अलग हैं, So some seeds got inside that जिंदगी में मुझे नहीं मालूम बड़ा आदमी कौन होता है, वो लोग का प्रोफेशन क्या होता है, but I know they are rich, they are happy, they are enjoying their life, and we need to get that for my family too. And every single day, I feel, people are worried of death, but the biggest problem and something that people should worry more is about dying every single day when you are alive. जब आप मर जाते हैं उसके बाद तो I don't know क्या होता है और हम कहाँ जाते हैं, but in case every single day you are not living the life you always wanted to do, a part of you dies inside, and I always thought we should live, we should be alive, we should give our 100% every time. Anytime I get an opportunity, I'll do it. So I was in a small city, तो उधर एक ही कॉलेज था, सिरसा बोल के जगह पे हम लोग थे, तो सिरसा में कॉलेज था. I did my BCom from there. Then people told me, you do an MBA, clear your CAT exam. So I worked for my CAT exam, cleared my CAT exam, got into a job. And two principles, Preet, I followed in my life, and I follow till date today also. And those two principles helped me a lot. Number one is, life में जो काम तुम्हें करने को मिल जाए, give your 100%, जो भी काम मिल जाए. So whatever life brought to me, I gave my 100% to that. I was in, TVS Motor Company. मेरी पहली job थी बिहार and Jharkhand. So I did my best there. When I did my best there, God gave me another opportunity. I got promoted and I came to UP. I did my best there and I gave my 100% there, and I got to be a regional manager. I got another promotion. And when I shifted to network marketing and being an author, being a YouTuber or anything like that, so one thing I always believe is do your 100%. Like हम सबको अपना 100% करना चाहिए. And after we are done with 100%, there is rule number 2. Do whatever is expected from you and then do a little bit extra. So जितना हम कर पाए उतना तो करना ही चाहिए, उसके साथ हमें थोड़ा सा extra करना चाहिए. So these two things I kept on following in my life, and one thing led to another. And 2007, I got a chance to do the network marketing business. In fact, 2006, somebody told me get into this business. मुझे लगता था ये बिजनेस बकवास होते हैं, ये कोई भी अच्छे लोग ये बिजनेस नहीं करते हैं, जिनके पास जिंदगी में कुछ नहीं होता वो लोग सब ये सब काम करते रहते हैं. Like that, I had all that opinion. Maybe I was well settled, salary was good, life was awesome. My wife, she was also working, So we thought, no, this business is not good for us. After some 13 months, I attended one event. Then I realized business में कमी नहीं थी, मेरे attitude में, मेरी opinion में कमी थी. The way I was looking at this business, that was wrong. So जैसे ही मैंने मेरी opinions को बदला और जैसे ही मैंने business को deeply study किया, then I realized this is the one जहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं. And I was looking forward. वो जिंदगी में जो एक ख्वाब था कि बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है. I thought this is one platform which can give me that opportunity. And then I started off, and one thing led to the another. दीपक, आपने बहुत सही बात बोली कि जब हम शुरू में जाते हैं, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता है, तो बहुत सारे अभी लोगों के दिमाग में वो फर्स्ट थॉट आता है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसको करना है. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा मेहनत है कोई भी काम करते हो. जैसे यू ऑल्सो सेड कि मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी ज्यादा बात करूं, so that everyone is able to understand that. No, You it's all already right. have Absolutely all right.
और बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं, सो पीपल विल स्लोली आंसर योर क्वेश्चंस आल्सो। साथ साथ Okay. चलते रहिए। एंड Yeah. तो दीपक, जब आपने स्टार्ट किया, यू लेफ्ट द जॉब, इट्स वेरी गुड दैट यू शेयर टू प्रिंसिपल्स कि 100% अपना किसी भी काम में दे दो, और सेकेंडली Yeah. गो अ लिटिल एक्स्ट्रा माइल, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आप डालो। Yes. तो उसमें लेकिन क्या आपको कोई चैलेंज आपकी फैमिली की तरफ से या लोगों की तरफ से नहीं आया, क्योंकि आपने इतना हाई लेवल पे जॉब छोड़ा, हाई पोजीशन पे, और उसको छोड़ के यू स्टार्टेड योर नेटवर्क मार्केटिंग टीम, तो आई एम Yeah. श्योर आपको चैलेंजेस बहुत आए होंगे। तो आपने, मैं इसलिए ये सवाल भी आपसे पूछ रही हूँ बिकॉज ये बहुत सारे लोग हैं जो ये शायद जानना भी चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री में आना Right. चाहते हैं, पर ये डाउट के दिमाग में है, Right. तो उनको भी चैलेंज जरूर आते होंगे, तो ये कैसे एड्रेस आपने किया? See, Preet, my feeling is, अगर कुछ भी करने निकलोगे चैलेंज तो आएगा ही। यू नो, अगर आपको कहीं से भी पढ़ाई करनी है तो कोई चैलेंज नहीं है, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू आईआईटी, यू वांट टू गेट इनटू आईआईएम, चैलेंज इज देयर, राइट? एनी कंपनी यू वांट टू डू अ जॉब, चैलेंज इज देयर। आप छोटा किराने का दुकान खोलेंगे ना, लाइक वन स्मॉल डिपार्टमेंटल स्टोर, तो उधर भी चैलेंज तो आएगा ही आएगा। इफ somebody is looking for a life without challenge, there is only one place जहां पे challenges नहीं है, and that is called graveyard and cemetery. So if anybody is feeling yeah, please. So yeah, Right. challenge तो आएगा ही। My point was very simple, please. जिस काम को मैं करता हूँ, अगर मैं उसको पूरी जिंदगी भी करूंगा, मुझे महीने में 10-20 लाख रुपए मिलने वाला नहीं है। नंबर 2, बिल्कुल। जिस काम को मैं करता हूँ, जिस जॉब को मैं करता हूँ, अगर मैं उसको 10 साल भी करने वाला हूँ, 15 साल भी करने वाला हूँ, तो जब तक मैं एक्टिवली काम करूंगा तो मुझे पैसे आएंगे। यू नो, आई कैन नेवर गेट आउट ऑफ इट, राइट? और इस बिजनेस में मुझे क्या दिखाई दिया, 3 से 5 साल अगर ठीक से काम कर लेंगे तो आई कैन अर्न 5 टाइम्स मोर देन माई सैलरी, दैट इज 1। नंबर 2, अगर सिस्टम के साथ बिजनेस को किया और 5 साल अगर ठीक से बिजनेस को ढंग से सिस्टम के साथ किया, तो फिर खानदान में किसी को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगा नौकरी में भी चैलेंज है, वहां भी चैलेंज है, लेकिन जहां वो चैलेंज है उसमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और साथ में मैं फ्री भी हो सकता हूँ, तो व्हाई नॉट टेक इट अप, राइट? And you know, I also felt like quitting, Preet. If somebody is there on this live discussion right now, you know, I just want to tell upfront, अगर आप में से किसी को लगता है मुझे क्विट कर देना चाहिए, I also used to feel every single night, इसको छोड़ देना चाहिए यार, ये जबरदस्ती, लाइफ इज गुड एंड कंफर्टेबल, क्यों? लाइक आई एम अ रीजनल मैनेजर, लोग अपॉइंटमेंट लेके मिलने आते हैं। 2007 में व्हाटएवर सैलरी आई वाज गेटिंग टुडे आल्सो इज अ ड्रीम फॉर पीपल, इवन आफ्टर 13 इयर्स ऑफ लिविंग दैट जॉब। मेरे मम्मी पापा को रिटायरमेंट पे जितने पैसे नहीं मिलते, मिला के दोनों को उतने मुझे मिल रहे थे आज से 13-14 साल पहले। यू नो दैट, आई मीन, ऑल दैट विल हैपन, राइट? और मेरा एक लाइफ था सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक का लाइफ, जब मैं ऑफिस में रीजनल मैनेजर होता था। शाम को 6 बजे के बाद एक अलग लाइफ हो जाता था, लाइक, एंड सेम चैलेंजेस दैट एवरीबॉडी फेस, वी आल्सो फेस। लाइक सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक लोग मुझे अपॉइंटमेंट लेके मिलने आते थे, 6 बजे के बाद मुझे अपॉइंटमेंट देते थे और उसके बाद गायब हो जाते थे। यू नो, आई यूज्ड टू फील रियली बैड एंड आई डिसअपॉइंटेड मेनी टाइम्स, but I realized 2 things which helped me to pass through this challenging phase and these challenging times. Number 1, इसको छोड़ने में कोई बात नहीं है, आज ही छोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर छोड़ के करूंगा क्या? यू नो, I didn't have any other option. या तो मेरे पास 10 और ऑप्शन होते। यू नो, आई रियलाइज लाइक मेरे को इसी बिजनेस से वो मिल सकता है, और जितने पैसे मेरे पास हैं, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, आई कुड नॉट हैव डन एनीथिंग एल्स विद माई लाइफ। So, and quitting this business means quitting on my dreams. And I was very clear, I don't want to quit on my dreams, like matter over. So, and second is, you know, whenever I felt like quitting, I thought, you know, I asked myself, तूने शुरू क्यों किया था, you know? और अगर जिस काम के लिए शुरू किया था वो अब नहीं मिल रहा है, तो then we should continue doing it. So, a lot of challenges were there. And I found one principle in life. Until date, I follow that also. I'm a simple man. I have 5-6 things in my life which I'm holding on to, and every field, whatever new project I take up, वो सारी चीजें मेरी मदद कर देती हैं। तो one of that is, जिंदगी में जब भी तुम किसी गोल के लिए काम करने के लिए निकलो, अगर वो गोल पूरा नहीं होता, तो don't change the goal, change the way you're working. Change the style of working, you know, change all those things, then it will work out.
So Right, that's how right, I right. managed through my initial days of struggle and all that. वंडरफुल वंडरफुल। दीपक, इसमें अभी आपने बोला कि शुरू में मीटिंग्स में जैसे आप जाते थे, तो Yeah. आई नो दैट आप काफी बार गए और शुरू में जैसे आपने 100 लोगों को बुलाया तो एक या दो लोग मीटिंग्स में आए, और दिस इज अ चैलेंज इन नॉट जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग बट मेनी मेनी फील्ड्स। रिजेक्शन जो Yes. होता है ना, वो सबसे बड़ा एक सेटबैक होता है, लोग वहीं रुक जाते हैं। So Right. what is it that you want to say on rejections कि इसको कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि जिसने वहां से आगे कदम बढ़ा लिया, आई थिंक फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है। Yes. Very true. Very true. um, आपको see किसी Preet, का एक one मैसेज क्या है इसमें कि सर रिजेक्शन sorry. बहुत आ रहे हैं तो क्या करें? तो हम रिजेक्शन की ही बात कर रहे हैं एंड somebody is asking कि रिजेक्शन बहुत आते हैं, क्या करें? Okay. There is no see, it's a numbers business. I always took rejection, as one number. 10 लोगों से बात करोगे, 8 लोग मना करेंगे, 2 लोग हाँ करेंगे. Don't worry about कौन क्या बोलता है. लेकिन if you continue doing the numbers, you will get your results for sure. I mean, we need to accept it. See, I tell you, very simple, Preet. There is something called feature, and there is something called a problem. You have electricity switch in your house. You put your finger there, तो आपको करंट लगेगा, right? You know that it's feature of electricity. You don't get upset about it. And if you complain to somebody, people will tell you, Preet, जब तुझे मालूम है कि बिजली को छुएगी तो you will feel current or something. Why did you touch it? It's feature of electricity. It's not a problem. Rejection is a feature of any sales business. It's not a problem. If somebody is saying rejection is a problem, it means they have not really understood the business. Any business, you take property business, you take insurance, or you sell anything on earth, right? Mercedes, BMW, Apple, Sony, you name it, everybody faces rejection. So rejection is part of the game. We need to do the numbers. That is the main thing. Once somebody asked me once, I speak to 10 people and 2 people only join my business. I said, how many you want? He said, I want all 10. I said, then speak to 50 people. Matter over. Yeah. I mean, so ना रिवर्स साइकोलॉजी जो हम yes. क्या अचीव करना है उसको उल्टा चलना शुरू कर दीजिए कि उसको अचीव And करने के लिए हमें yeah, क्या exactly, Preet. Yes. And Preet, one more thing I tell you. Biggest problem in this business is people start the business and they feel they know it. For engineering, they are ready 4 years of BTech, another 2 years of MTech. For doctor, they are ready to study for 9 years. For a CA, they are ready to study for 6 years, 7 years. Then it comes to network marketing, they are not even born in the business, and within 3 days, they feel I know it. And somebody who is already into network marketing now, lot of people know, वो लोग जब लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं तो क्या बोल के आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आ जाओ, कुछ नहीं करना, आ जाओ, कुछ नहीं, because people are desperate, people are desperate to get people inside. तो वो लोग उन्हें wrong expectation set कर देते हैं और उसे लगता है कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं करते हैं, 3, 4, 5 मीटिंग करते हैं, रिजेक्शन आती है और बाहर हो जाते हैं. My like submission to everybody, if you want to do network marketing like a career, you need to learn it. You need to learn it like a subject. You need to properly master it. You need to up your skills. Sales is not a joke. Sales is a skill. You need to learn how to make a list, how to invite people, how to take appointments, how to show your presentation, how to close people. When people get into the business, what to do with them. You need to learn all these things. Then only you will be able to grow. So network marketers का attitude ना learning के लिए नहीं रहता है. बस वो मोटिवेशन में चलते रहते हैं और कंपनीज में जो प्रोग्राम होते हैं वो भी सब मोटिवेशन बेस्ड रहते हैं. 90% ऑफ द प्रोग्राम्स आर मोटिवेशन बेस्ड. लाइक आप आइए, आप प्रोग्राम अटेंड करते रहिए, प्रोडक्ट खाते रहिए, प्रोग्राम अटेंड करते रहिए, प्रोडक्ट खाते रहिए. लाइक सत्संग थोड़ी ना है कि आइए, आते रहो, हर संडे को आया करो और तुम्हारा काम बन जाएगा. इट्स नॉट अ सत्संग हैपनिंग, इट्स अ बिजनेस. So people who want to take it up seriously, they need to learn it, they need to master it, and then if they practice, then sky is the limit in this business, the way it is coming up. Yeah. दीपक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है कि इसको एक सीरियस करियर की तरह आप कीजिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने मोटिवेशन लिया या एक उसका मटेरियल एस्पेक्ट देखा और उस पर चले गए. यू नीड टू नो कि प्रोसेस है
उसके तरीके क्या हैं, और आपने वहाँ Yes, पे अभी थोड़ी देर में हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज आई नो कि आपने वो गैप भी बहुत अच्छा सा फिल किया है इंडस्ट्री में, right. कि लोगों के क्या वो टूल्स हैं, क्या वो नॉलेज है, Yes. कहाँ से वो सीख के इसको लर्न कर सकते हैं। हम उस पे आते हैं। उससे पहले एक चीज मैं डिस्कस जरूर करना चाहूंगी, कि अभी जैसे लॉकडाउन में काफी लोगों के जॉब्स चले गए हैं, सो दिस हैव हाईलाइटेड Hmm. द नीड फॉर पैसिव, कि जॉब नहीं हो फिर भी घर को कैसे चलाए, फिर भी अपना लाइफस्टाइल Right. कैसे मेंटेन करे। सो नेटवर्क मार्केटिंग डेफिनेटली इज वन बिग वे ऑफ earning passive income. So would you want to throw Yes. some light on sources of income, passive sources and work Yeah, from yeah, home yeah. options? और ये किसके लिए अच्छा है, किस तरह के लोगों को इसमें आना चाहिए और कर सकते हैं? See, Preet, before Corona and COVID also, we have been telling people, you speak to any income tax lawyer or you speak to हम्म any wealth advisor. Everybody is telling these days that one income source is not good enough. If you need a good, secure life for yourself and your family, you need to have minimum two income sources. अगर आपको अब सेकंड इनकम सोर्स करना है, तो आपको चार चीजें जनरली चाहिए किसी भी बिजनेस में. नंबर वन, यू नीड टू हैव मनी. लाइक कुछ भी करोगे पैसे तो चाहिए. नंबर टू, यू नीड टू हैव टाइम. तुम्हारे पास पहली जॉब या पहले बिजनेस के बाद समय भी बचना चाहिए, राइट. नंबर थ्री, यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस एंड समबडी हु इज टीचिंग यू. यू नीड मेंटोरशिप. नंबर फोर, you need to have some risk taking capacity. 99% of the people who are right now into jobs या उनका जॉब चला गया, या जिसका जॉब नहीं भी गया ना, then also I want to tell people, सेकेंड इनकम सोर्स बनाने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब पहला इनकम का सोर्स ठीक से चल रहा हो. हम्म Everybody, whatever you're doing, you need to have minimum two income sources. You must have that. And network marketing, why it suits everybody? Because it doesn't need money. Upfront investment, किसी भी अच्छी कंपनी में upfront investment नहीं है. Some places you need to buy some products, वो आप पैसे देंगे, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, आपने सामान खरीदा and that your business starts. Time, आप जब चाहें तब कर सकते हैं. एंड थर्ड, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. जब आपने कुछ लगाया नहीं तो रिस्क किस बात का. एंड फोर्थ इज, देयर आर मेंटोर्स अवेलेबल, ट्रेनिंग्स अवेलेबल, सिस्टम अवेलेबल, पीपल आर देयर हु विल हेल्प यू एंड गाइड यू. बिकॉज ऑफ दिस फोर थिंग्स, इट आई कॉल दिस ओपन अपॉर्चुनिटी. आप एनी जेंडर, एनी एज, एनी प्रोफेशन, एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एनी एजुकेशन बैकग्राउंड, एवरीबडी इज वेलकम इनटू दिस बिजनेस. सो जो भी आप करते हैं, आप करते रहिए. I always recommend people, nobody should start network marketing full time. This is, I want to repeat it again in capital letters and Hindi also. किसी Your को भी first question, network yeah, marketing, it's so किसी को भी yeah. network marketing जॉब छोड़ के फुल टाइम नहीं करना चाहिए. और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे बिजनेस पे डाउट है. मुझे बिजनेस पे कोई डाउट नहीं है, मुझे आप लोगों पे डाउट है. आप लोगों से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमिटमेंट नहीं लगता है, वर्क एथिक Yes. नहीं है, लीडरशिप नहीं है. whatever you need in any other business, इधर भी वो सेम चीजें चाहिए. Commitment, passion, consistent daily working, hard work, ability to learn, ability to change, ability to follow the system. ये सब तो जैसा किसी और entrepreneurship venture में चाहिए ना, यहाँ पे भी वैसा ही चाहिए. बट यहाँ पैसे नहीं लगते हैं, इसीलिए डजंट मीन पीपल शुड टेक इट लाइटली. तो बाकी सब चीजें चाहिए. जॉब करते रहो, बाकी सारे काम करते रहो, साथ साथ ये काम करते रहो. एनीबडी हु हैज गॉट, हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, यू शुड फाइंड समबडी क्लोजर टू यू, जो आसपास आपको मिल जाए, एंड गेट इनटू, सी अ नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी प्लान. एंड if you can get into a network marketing business right now, it can solve, sometimes I say corona is a temporary problem, but network marketing will give you a permanent solution. Because network marketing is a permanent solution to your permanent problems जो इतने सालों से चलती आई हैं. So go ahead and do it. Work with some nice company and start. Awesome. Deepak, we have about 170 people who are watching us right now, and काफी लोग बाद में भी जुड़े हैं, और बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं. जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, प्लीज ये एपिसोड जब खत्म होने के बाद आपको IGTV मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा. उसके बाद कुछ दिन बाद विल शेयर द लिंक फॉर यूट्यूब ऑल्सो. तो आप ये पूरा शुरू से सुन सकते हैं जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, बिकॉज दीपक ने बहुत सारे आपके सवाल शुरू में एड्रेस कर दिए हैं, स्पेशली रिलेटेड टू फैमिली को कैसे कन्विंस कराएं एंड ऑल. सो दीपक, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बोला था, जो इनफैक्ट आप तो जानते ही हो कि समटाइम्स बैक
even I had thought of getting into it. तो एक बार Yeah. मेरे दिमाग में भी ये थॉट आया था नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन उस वक्त जो मुझे गैप लगा था, मैंने कुछ लोगों से बात की थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये होता क्या है। एंड Right. जैसे किसी से सुना, जो जनरली लोग करते हैं, आई बी वेरी ऑथेंटिक हियर, जनरली जो लोग करते हैं कि किसी ने सुना और बिना सिस्टम की नॉलेज लिए, बिना उसको एक सीरियसनेस के देखे आप आगे चले जाते Yes. हो। तो हाँ, जो मुझे उस वक्त गैप लगा था वो था कि देयर शुड बी अ सिस्टम, कि स्टैंडर्ड टूल्स हो कि उसको कोई भी अप्लाई करे, उसको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आए। Yeah. एंड आई हैव डिस्कवर्ड कि आपकी जो बेस्ट सेलिंग बुक है, विच इज बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, इट्स Yeah. एक्चुअली अ टूल सेट। बहुत अच्छे उसके रिव्यूज हैं, एंड वो टॉप 20 सेल्फ हेल्प बुक्स में भी आ चुकी है अमेजोन पे। तो Yeah. tell us more about your books and what was the inspiration and who should be referring to these books, और किस स्टेज पे उनको इस बुक को यूज करना चाहिए, बिकॉज अभी क्या है, एक तो काफी लोग ऐसे हैं जिनको अचानक से जॉब छूट गया और कोई सोर्स ऑफ Yeah. इनकम नहीं था। Is it okay for them to start, reading that book and then connect with you or any other network marketing company, as you said? तो Yeah. उनके लिए क्या हम प्रोसेस यहाँ चार्ट आउट कर सकते हैं, which can help them, start looking at this option using your book, of course, and other Okay. systems that you're telling? Yeah. See, Preet, network marketing में I tell like we have been discussing now also in today's discussion also that people don't have the skills and then वो बाहर हो जाते हैं business से because they make some mistakes, right? So last 2 years I have been working now on developing a lot of tools for success in network marketing. So now people, whatever they need, any company, any plan, any product, whatever they need to be successful in network marketing, we have at one place with us itself. So we have 2 books now, Preet. You heard about the second book also, no? You know about the second book also. Yeah. Achieve more, succeed Yeah. faster. Achieve more and succeed faster will set the ground. आपको ये business करना क्यों चाहिए? Why to do this business? It has got Okay. 31 reasons why everybody should get into network marketing. So that is for Awesome. people, yeah, if they are thinking about researching this business, मैं ये business क्यों करूं? And second book is Be a Network Marketing Millionaire. That book is about how to do the business. So from A to Z, everything about network marketing. In fact, we ran a challenge also a month back that if you find anything that is not there, that is required for network marketing and that is not there in the book, you please let us know, and there were 2 points that came up and we updated the book now. So this book is available now in 6 languages: Hindi, English, Tamil, Malayalam, Marathi, and Odia also we launched last week. So 6 languages book Amazing. is there. Yeah. Anybody looking for free video training, on my YouTube channel, there are 250 plus videos there, and people in 110 countries, they are watching those videos. And 3 months Yes. back, we launched an online course also for network marketing, Oh, which is, amazing. yeah, people in 12 countries are using that course. And in that course, though, if anybody does that course, it's, literally impossible to fail. I mean, that's how we have designed that course. 91 day, I work with people. Every single day, we have video, task, assignment, covering every single topic on network marketing. So that course is called Ultimate Network Marketing Mastery. So that is also like is giving crazy results to people in US, Canada, London, Dubai, Bangladesh, Nepal, and every state, every part of the country, India, they are using that course, and it's just transforming people and taking them to next level. So be it books, be it ebooks, be it free videos, be it an online course, or anybody looking for a high performance coaching, we have a high performance coaching also, 1-to-1 session. So like now, if you want to be successful, you cannot complain कि सिखाने वाला कोई नहीं है या tools available नहीं है. Like what happened with you, Preet, that time, and Yeah. yeah, Few years back. few years back. Now we have Yes. everything under one place. Yeah. Yeah. बिकॉज ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप किसी को प्रॉब्लम क्या है दीपक, कि अभी भी काफी जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है. सो देयर Yeah. आर लॉट ऑफ, राइट? तो वुड यू वांट टू टॉक समथिंग अबाउट दैट, बिकॉज बहुत जरूरी है लोगों को इसकी रियलिटी जानना. Right. एंड या See, 2-3 reasons are there why mainly this negativity is there. Number one is because of wrong companies, of course. I mean, there are a lot of companies जो promise कर देते हैं कि आप इतने पैसे दीजिए आपको ये मिलेगा, आप इतने पैसे दीजिए आपको वापस ये मिलेगा.
those wrong companies. Now government has passed a legislation, or they are working really hard on it, but still जैसे कुछ ना कुछ करना होता है गलत, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है, right? So lot of wrong companies are there. People should avoid those companies. There are cheats in every business. There are wrong players in every business. And generally मैंने देखा है जिन लोगों के साथ चीटिंग होती है ना, उनके साथ होता पता क्या है, actually their greed overpowers their intellect. उन्हें पता है ये हो नहीं सकता है कि आपने 1 लाख रुपए दिए, अब आपको हर महीने 10-10 हजार रुपए मिलेंगे और अगले 5 साल तक मिलेंगे. They know it कि ये है तो गलत, राइट, मैं जुआ खेल रहा हूँ. बट बाद में पहले वो लगा देते हैं, लालच में आ जाते हैं, और उसके बाद then they start complaining that industry is bad, industry is bad, industry is bad. So we should be aware of what we are doing actually, right? So one reason is negative companies. One reason for negativity is bad companies. Second reason of course is जो लोग network marketers आज हैं ना अभी, like people who are into network marketing, sometimes in their enthusiasm, desperation, वो सामने वाले को ये बोल के ले आते हैं कि कुछ नहीं करना, आजा, कुछ नहीं करना. So they set the wrong expectation. Yeah. So when people come, तो फिर हमें भी समझ आती है किसे ले आए, और उन्हें भी समझ आती है कहाँ आ गए. I mean, they also thought it's a joke. We also thought कोई बात नहीं, but it's a serious business. So it needs training, it needs development, and it needs some work. People who take this business as a hobby or as a lottery or a get rich quick scheme, ये सारी चीजें जो करते हैं ना, like I mean, those people, they will find it really tough to get into this business. Like this mentality has to go कि बिना सीखे कर लूंगा. And third thing I find reason for negativity is आप अगर कहीं जॉब में जाते हैं ना, तो 100 people they apply for a job, फिर उनका resume पे selection होता है कुछ, they shortlist people based on resumes, then interviews, and finally one person is selected. But जब network marketing में आते हैं तो everybody is welcome. There is no, आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाते. There is no resume, आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, what is your background, what have you been doing. So everybody is welcome here. 99% of the people who complain कि मैं fail हो गया इस business में, ये business चलता नहीं है, 99% of them, उन्होंने business शुरू ही नहीं किया. They bought some product, used some product, and they said पैसे कमाएंगे. Like idiots. I mean, how can money come just like that? It is not possible like that. अगर आप, I mean, 99% people who say मैं network marketing में fail हो गया, they have not even started network marketing. एक toothpaste खरीद लेना, एक product खरीद लेना, एक shake खरीद लेना, or buying some product is being a customer, is not being a business owner. So 99% of them, they are just, because वो wrong expectation से आए थे ना, इसके लिए they thought कुछ बन जाएगा, और क्योंकि कुछ हुआ नहीं, वो खुद को ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, and then they start complaining about the industry. I mean, nothing else. Magical होता है magical चाहिए कि अभी सब और सब ठीक हो गया. आप डाइट फूड, आप अच्छा फूड नहीं है कि आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, आप जंक फूड खाए जा रहे हो, फिर आप बीमार हो रहे हो, और आप कहते हो कि मैंने दवाई लिया और आराम आ जाए. अपनी डाइट नहीं चेंज करना, एक्सरसाइज नहीं करना. आई थिंक ये फंडा इज एप्लीकेबल एवरीवेयर कि कहीं भी जाओ आपको एक right, you have to have a system and plan, and the beauty is that you already have that system now through your books and your online courses which are available on your website, which is deepakbajaj.biz, DIZ. So Deepak, एक सवाल बहुत लोगों ने बीच में किया है कि how can they identify which network marketing company to join? कैसे पता चले कि कौन सी कंपनी अच्छी है? This is an important question, Preet. इसके लिए, if they can just type on the YouTube channel, my YouTube channel, they will get exclusive videos for this. On both my books, there are four pages of chapters on this. But since you have asked, and I'll just quickly tell a broad thing. We cannot explain it right now in depth, but broadly, if I have to tell, they need to look at 4 things. Number 1, company ka credibility and track record. So that is first thing they need to check. It's an old company, directors are good people, they have a track record, so they need to work with the right company. That's number 1. Number 2, products. I mean, they need to make sure that products are good, products have got value for money, there is a good range of product available, and products can be bought repeatedly,
और एक आम इंसान की जरूरत का सामान अवेलेबल है उधर, good products. And third is income plan has to be good, no hidden conditions. Mm-hmm. It has to be based on sale of products, nothing, not on anything else. It's not a salary plan, it's not an investment plan, it's purely sale commission based income plan has to be there. Good income has to be there. And number four, they should join not only a good company but a good team also, जो उनको सिखाए कि काम को करना कैसा है. A good training and development system is absolutely essential to join any company. So a company with good professional management and a good professional track record and good products, value for money products, not dummy products or fake products, good value for money range of products. Income plan is good, and income comes not because of recruitment of people or because of some, hidden kind of a condition or something illegal, but purely based on sale of products. And fourth is they need to join a team that works, that has a system, proven system, क्या क्या करने से कैसे कैसे कामयाब हो सकते हैं, that all those things have to be there. So these four, if they can check, then they will be good. Right, right. So besides skill, Deepak, is it a good opportunity for housewives also? Because these days everyone is looking for a second source of income. सबको एक Yes. दूसरा जरिया चाहिए अर्निंग का, तो हाउसवाइफ्स के लिए किस तरह का ये अपॉर्चुनिटी है? बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक क्वेश्चन आता है मीटिंग्स का, कि हाँ. हाउसवाइफ हो, आप अगर बाहर नहीं जाते हो तो आप मीटिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज करोगी? आई एम श्योर ये चैलेंज Okay. बहुत कॉमन आता होगा. Simply two things I'll tell you. One is globally, as per WFDSA, World Federation of Direct Selling Association, 73% of direct sellers across the globe, they are women. 73% direct sellers are women. As per Government of India, as per KPMG and FICCI, 1 crore Indian women, 1 crore 8 lakh Indian women are expected to be in this business by 2025. So, I mean, numbers themselves are saying it's an opportunity more suitable, for women. As far as meetings are concerned, thanks to Corona now, I mean, all of us last 6 months, we got used to what you call Zoom meeting. online meetings, yeah, Zoom meetings and all these live sessions and all. So that So answers it, yeah. this is we all had this mind block कि meeting के बिना results नहीं आएंगे. But now I don't have even one or two, but thousands of people who have touched highest incomes of their network marketing careers in June, July, August during Corona. Wow. So And what kind of traditionally, income? yeah, Okay, okay. any kind of So income. what I mean, yeah. what's the scope of income that people who are actually following the system and the tools and are doing the way it should be done? तो किस लेवल तक वो लोग अर्न करते हैं, या क्या इनकम का स्कोप है, अर्निंग का स्कोप है उन लोगों के लिए? Maybe you could share some stories or examples with Any amount you. is possible, Preet. I mean, I'll not like to take names, but since you talked about housewives, there is an Indian woman working out of Delhi NCR. She was a housewife, typical housewife, never did any job in her life. Now she is into network marketing for I think 22 or 25 years. वो Wow. network marketing में है. And when I met her last few months back, she was touching around 75 lakh a month Amazing, of amazing. income. Yeah. So there are so many success stories in so many different companies. So sky is the limit. I mean, no, Right. no limit on that. I mean, it's a open plan. Whatever you want, but you have to work for it. It's We that. have to work It's for like it. Yeah. 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 But good part is once you establish it with the right system, then even if you're working or you're not working, I mean, money will continue to flow. Yeah, that's what passive income is. अगर आप actively Yeah. काम नहीं कर रहे, आपका income आता जा रहा है. लेकिन उस Yesterday base को also, set to yeah. yes. Please. Even yesterday also, I was doing a joint event with another lady from Mumbai. She was also housewife, no business experience, and she is now doing a business of I think monthly some 20 crores or something business she is doing Wow. in her organization. Yeah, in India alone. I mean, so this is about a lady in Mumbai. We did a event together last night. Yeah, so Great. sky is the limit.
wonderful तो वही opportunity, wonderful opportunity for women. Yeah. ये वही चीज है कि देखने वाले आपको नेसेयर्स भी मिलेंगे जो हर चीज के लिए मना करेंगे, कुछ वही सेम टेरिटरी में आपको वो लोग भी मिलेंगे जिसने उस पे ऊंचाइयों को टच किया है. सो चॉइस इज Yes. योर्स, आप कहाँ देखते हो. सो और वो दीपक वी हर काम हैव के लिए होगा, प्रीत. You बिल्कुल tell somebody बिल्कुल I want to be a life coach, they will say so many life coaches are there who becomes a यस. life coach. You tell मेरे को chemist की दुकान खोलनी है, they will tell the same for you, for chemist also. So don't worry about people. Yeah. Yeah. So we can we have 10 minutes, so we can take few Yeah. more questions. एक है कि मैम जब घर वाले मना करें तो उनको कैसे समझाएं. प्रशांत, ये दीपक में अगर आप शुरू में ये वीडियो एंड होने के बाद मेरे IGTV पे आप जाइएगा, वहां पे दीपक ने ऑलरेडी इसको एड्रेस कर दिया है, सो प्लीज वॉच इट शुरू से. अनिकेत इज आस्किंग हाउ टू मैनेज पीपल. How to manage people? It's an art अनिकेत and a skill. Yeah, you need to learn, Aniket, how to manage people. But a network marketing rule is very simple, Aniket. लोग वो नहीं करेंगे जो तुमने करने के लिए कहोगे, लोग वो करेंगे जो तुम करोगे. People will not do what you tell them to do. People will do what you do. So you start managing yourself well, your team will automatically be managed. सो एक क्वेश्चन है, इनवाइट कैसे करें, लोगों को इनवाइट कैसे करें. आई थिंक मीटिंग्स के लिए या सेमिनार्स के लिए. It's a little longer question, but again I'll say invitation करना आपको सीखना पड़ेगा. If you go to my book, there are 46 ready-made scripts. आपको खाली 46 में से जो अच्छी लगे एक स्क्रिप्ट बोल दो तो it's a very good way to invite. But you need to Amazing. learn inviting people. Yeah. One thing I can tell you on this, whoever has asked, there is difference between invitation and intimation. Zoom के link WhatsApp पे forward करना, if somebody is feeling that is called invitation, I mean that's a lie and you are in a different kind of a world. That is not called invitation, that is called intimation. So 99% of you guys are failing because you feel Zoom का link आया और मैंने आगे मेरे 20 लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेंड कर दिया, उसके बाद लोग क्यों नहीं आते हैं आई डोंट नो. लोग कभी नहीं आएंगे. दैट इज नॉट इन्विटेशन. इन्विटेशन हैज टू बी लर्न, इट इज पर्सनल, इट इज वन टू वन एंड इट हैज टू बी मास्टर्ड. यस यस, वो कनेक्शन बहुत जरूरी है बनाना. Yes, आपका please. किसी भी Yeah. Absolutely, yes. बिल्कुल. No connection, no बार network बार marketing, Preet. Like, I don't know, you know it very well now. I mean, no connection. If connection is not there, network marketing is not there. It's purely connection. Network marketing minus connection is called selling. यस. इवन सेलिंग आल्सो नीड्स कनेक्शन. अगर वो भी आपको डील क्लोज करना है, यू हैव टू डील विद द ऑब्जेक्शंस ऑफ पीपल. Yes. जब तक आप कनेक्ट नहीं बनेगा वो एक विश्वास नहीं बैठेगा, वो किसी भी Correct. फील्ड में एप्लीकेबल है. So we can take 2-3 more questions. One is Ajit is asking which book, sir. Ajit, दो books हैं. One is Be a Network Marketing Millionaire and second is Achieve More, Succeed Faster. And Yeah. both are available on Amazon. And you people can also join, Deepak's channel. And he has lots and lots of amazing videos जो आप देख सकते हो YouTube पर. So there is somebody who's saying he's watching your Ultimate Network Marketing Mastery course and invite. जॉब करते करते कैसे करें, ये अजीत दोनों ने सर ने पहले आंसर दे दिया है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा IGTV पर और आपको यू विल फाइंड द आंसर. एंड okay, so Nikesh is asking, I have a lot of ideas but I'm not able to take initiative. I am confused. What should I do? I don't know what is your challenge, ये but generic है. Yeah. if you know, I two ways I'll recommend how to handle this. Number one is write down all your ideas and select the top one or two. That's it. Which are like most important. अगर वो आइडिया पे तुम काम करना शुरू कर दोगे, you will be closest to your dreams and you can fulfill your dreams faster. So select only one or two ideas. And second is
start action. I mean, immediately start acting. Don't wait कि जिस दिन पूरा जानकारी हो जाएगा तब शुरू करेंगे this and that. So you begin wherever you are, in whichever stage of life you are, just start acting on any one idea immediately. So there is one question जो 2-3 लोगों ने पूछा है कि जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए? See, you need to it's very simple. One or two ways I can tell you. सबसे पहला, आप अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले लीजिए और आपके प्रोडक्ट्स के फीचर्स और बेनिफिट आपको पता होने चाहिए. अगर ये पता है आपको तो 90% काम हो जाता है. Most of you guys don't get to know your product well and then you straight away jump in front of the customers, right? और जब कोई मुझसे ये सवाल पूछता था कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरा अगला सवाल होता था महंगे कंपेयर टू व्हाट? किससे महंगे हैं? जिंदगी में महंगा सस्ता कुछ नहीं होता. आपको लगता है मर्सिडीज महंगी है, लेकिन किसी को तो वो सस्ती लगती है जिसके लिए वो खरीद लेता है. तो जब कोई आप मुझसे पूछता था महंगा कंपेयर टू व्हाट, फिर वो ना किसी का नाम बताता है. देन आई कंपेयर माई प्रोडक्ट टू दैट प्रोडक्ट एंड देन वी कन्विंस देम. अगर आप सिर्फ महंगा, अगर आप ये जवाब देते हो ना कि नहीं 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 ये महंगे नहीं है, आपको वहम हो गया, आप इस्तेमाल करिए देखिए, नो, देन इट विल बी माई वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड. सो जस्ट आस्क देम. सवाल का जवाब सवाल से देना सीखिए. लाइक यू आस्क देम महंगे कंपेयर टू व्हाट. अब फिर महंगे सस्ते का मसला नहीं है. अब ये दो प्रोडक्ट हैं, उसका प्रोडक्ट और मेरा प्रोडक्ट. नाउ आई विल कंपेयर एंड इफ माय प्रोडक्ट इज रियली गुड आई विल डेफिनेटली विन ओवर इट. Amazing, amazing. दीपक, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ because when I observe you, मैं देखती हूँ कि आप इतने ज्यादा disciplined हो. You wake up at a particular time, then every day you are posting beautiful, amazing, inspiring videos on your channel, on Instagram. You must be busy with lots of other operational things also and management meetings. And you are also focused on your fitness and discipline. So how do you keep charged up? आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? What are the things that you follow, daily habits that you can share with people, जो हर रोज ये किन हैबिट्स को अडॉप्ट करके जिंदगी में और आगे बढ़ सकते हैं? Okay. Because you are living that life, you inspire. Right. So सभी जानना जरूर चाहेंगे कि उसका राज क्या है. See, 2-3 things which I feel are very important. अगर वो होती रहती हैं तो लाइफ में बैलेंस बना रहता है. And when that balance is there, it shows everywhere in your life. Our health is our topmost priority, right? 24 घंटे में से अगर हम एक भी घंटा हेल्थ के लिए नहीं निकालते हैं तो then someday we have to pay the price. So every single day, come what may, we need to find 1 hour for our health. I mean, come what may, we need to do that. Right. So this is personally I have been following for so many years now, like maybe childhood days say I have been following this. Second is Deepak, we lost your voice. Can't hear you. आपकी आवाज चली गई है दीपक. No, we lost your voice. नहीं, I think आप, हाँ, now we can hear you. yeah. Okay. Yeah, Okay. I can hear you. So one is daily 1 hour for my workout, and then second is my half an hour for my puja and all, and third is I have time with my kids, my family, so that kind of recharges everything. So these 3 things, kitna bhi kaam ho jaye, I make sure that I am with this, I am on this. And then there were a lot of issues which I sorted out when I realized one concept called circle of influence. I got this from Tony Robbins. I was in US, and he told this very beautiful point that जिंदगी में कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. And you need to one major thing that we all need to understand to live a happy, good, fulfilled life is जिस चीज
जिस भी चीज को लेके मैं परेशान हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ, जो रिजल्ट्स मैं चाहता हूँ, इज इट इनसाइड माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और इट इज आउटसाइड माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. सो व्हेन थिंग्स आर आउटसाइड माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, I just leave those things, and I just take care of things which are under my control. And if this is one, maybe you can call it time management principle or whatever. So I just keep doing every single day whatever I can do, whatever I can do, and slowly it gets compounding. It gets compounding one after the other, Yeah, and yeah. things keep happening. Yeah, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, that's it. वेरी गुड इंसाइट. तो दीपक, काफी लोग पूछ रहे हैं कि अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं. Instagram. I personally answer every single DM on my Instagram. So they are on Instagram now. They can message me. I answer every single DM. Like we respect our people. So we have close to 6 lakh people with us on social media. But I believe this family kind of love, kind of responsibility I feel for my community, my book readers, my course participants, my Instagram followers, YouTube subscribers. So we love these people. Like, these people are our life, and we'll do everything possible for our community. So every message that they put on DM, Instagram DM, we reply to that. Like I personally अमेजिंग, reply to that. Yeah. लवली. इनफैक्ट यहाँ पे तो मैं भी बोलना चाहती हूँ कि आई सी अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग इन यू. इनफैक्ट मैं आपके इंटरव्यू में सुन रही थी वेर यू शेयर्ड, जहाँ आपकी मदर ने एक बहुत प्यारी सी बात कही थी. आई वाज शेयरिंग इट विद माय मदर दैट Okay. अगर आप नियत काम करते हो तो बरकत उसी में Yeah. पड़ती है. Yes. Yes. If Yes. your intent is right, that is when you flourish. That is when your work flourishes. And I have seen you. काफी लोगों से मिलती हूँ जो बिजनेस में बहुत झूठ बोल के भी लोगों को लाते हैं, बट आई नेवर सीन यू डू दैट. जो ऑथेंटिसिटी आपकी निकल के आती है, आई थिंक दैट हैज अर्नड यू रिस्पेक्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. जी हाँ. Appreciate that. और Thank आई you so वुड much. हैव लव and Deepak, I would have loved to, like go on and on, and we still have 5 minutes, but मैं आपके साथ तो घंटों बहुत कुछ सीख सकती हूँ आपसे. So Yeah. we have My pleasure. some more questions. Okay, I think so एक 59 question you आ need to रहा. keep a track, Preet. Otherwise it will be cut Yeah, by it's Instagram. 52. It's 59. showing 50. Huh. Yeah, I usually keep it 55. अभी 52 दिखा Yeah. रहा है. Oh, I keep a tracking. So एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि सर हाउ टू बी कंसिस्टेंट. गुड क्वेश्चन एक्चुअली. कंसिस्टेंसी से रिजल्ट्स आते हैं, तो हाउ टू बी Yeah. कंसिस्टेंट. See, people are working based on two things, और उन्हें लगता है वो उनको आगे लेके जाएंगे. One is called motivation and second is called willpower. Motivation and willpower, they are fake. I am a motivational speaker, but I don't mind saying it. Motivation is a fraud. Willpower is a weak support. Like they cannot take you forward in life. Most of the people, they feel आज मोटिवेशन आया तो कर देते हैं, कल मोटिवेशन गिर जाता है, तो इसीलिए फिर वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है. मोटिवेशन एंड विल पावर, डोंट बिल्ड योर करियर बेस्ड ऑन दैट. Build your career with rituals. So how I define it, I have defined it in my book also. We call it primary daily actions, PDA. जब आप मोटिवेटेड हैं तो आप डिसाइड करो कौन से 3 काम हैं जो रोज करने हैं. सिंपल छोटे छोटे 3 काम जो रोज करने हैं, और उन मोटिवेशन जब तक रहे तब तक उन कामों को करते रहो. करते रहोगे तो आदत पड़ जाएगी. फिर मोटिवेशन हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक. इमोशंस किसी भी हाल में रहे, हालात कैसे भी रहे, those 3 things we need to do every single day. बस. After that, we will not worry about goal, motivation, results or anything. We'll worry about those 3 things in life. Come what may, I need to do those 3 things. I mean, that's it. So if you know your primary daily action, 3 things that you need to do every single day, then after that consistency doesn't generally have then there is not a problem on consistency. Right. Very simple but very powerful formula. एक inspired action और एक consistent action. 3 चीजें डिफाइन करो, उसको करो, जो भी हो, just do it. That is what brings the results. Very, very powerful. So, Deepak, is there anything that you would love to share with so many people who are there? Because you have shared such amazing insights जो I think किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी इंसान को गाइड कर सकता है. There are very beautiful tips that you shared, and you live by those. I've seen you, and you live by those, and you have generated results. So that's the power of sharing this. And
So yes, please, if you have anything that you want to share, stage is all yours. Okay. See, Preet, I just want to tell one thing. Our this generation, no, they want everything fast. You know, Yeah. Yeah. I get every single day, I get hundreds of messages. I want to be a millionaire by 20. I want to become a millionaire in next 2 years. You know, how can I have viral videos? You know, सबको एक बुक लिखना है जो बेस्ट सेलर होना चाहिए. सबको वीडियो बनाना है जो वीडियो वायरल वीडियो होना चाहिए. Viral होना Everybody चाहिए. wants a million. Yeah, everybody wants a million, a private jet and all that within how many years? 2 years, 3 years. You know, my friend's life doesn't go like that. Yeah, I mean, we need मैजिकल to पेन की हम follow. बात कर Yeah, रहे yeah, yeah. You know, it's only on कि जादू हो Instagram. जाए. Yeah, Preet. हम्म. Only on Instagram, only on Facebook, success looks glamorous. Okay, but in reality, whoever has reached wherever they have reached, they have paid the price for it. So life works on principle of cause and effect. जो जो आपको चाहिए, that is effect. और जो जो आपको उसके लिए करना है, that is the cause. You work on the cause. Results are automatic. You know, so don't be obsessed about your million viral video, viral content, best-selling book. Don't worry about all these things. You work on the cause. Improve Yeah. yourself and do two things. Reorient your mindset and reskill yourself. Upgrade your skills and Right. reorient your mindset. You know, if you are ready to do that, anything is possible in life, you know. And don't worry about goals and all, dreams and all. Dreams are cheap. You know, it takes a second. Everybody can have a dream. सबके dream होते हैं. It doesn't take anything to have a dream. You don't rise to the level of your dreams. You fall to the level of your skills. So you need to, whatever you want in life, you need to train yourself for that. You need to build your aptitude, attitude, skills, knowledge, tools, and then everything will fall in place. So shortcut के पीछे मत जाओ. Shortcut की वजह से लोग आपको लूट लेते हैं, right? You know, like, Yes. so yeah, don't waste your time into shortcuts. Master the trade, whatever you want to do, and then you will shine like crazy. रिजल्ट अपने आप Right? आएंगे. If you are Automatically. consistent and और आप सही इनपुट्स दे रहे हो. अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो सीखिए, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो. Yes, डायरेक्शन आप absolutely. इवैल्यूएट करते रहो और चलते रहो. So Deepak, thank you so much for My sharing pleasure. these amazing insights. It was All lovely, my lovely. pleasure. Learning so much from you, and thank you everyone who joined and Yes, thank you, lovely Preeti. audience. Yeah, and thank you once again, and do look, check out the replay once it is uploaded on YouTube. और ये खत्म होते ही अभी IGTV पे फिर से available होगा, so you can watch it again and again, get inspired, and create a better life. So Deepak, I really wish you that you keep, spreading light to many, many, many Thank you lives, so much, and Preeti. thank you for being a Thank you part so of this much. journey. Thank you All so my much. pleasure. All the very best to you and everybody who is Thank there on this live video session with us. Best wishes to all of you. Be an inspiration. Whatever you are doing, just go to the top and, you know, make everybody proud. All the very best. Thank you so much. Awesome. Thank you. Bye. Have a lovely Thank you. day. Bye, everyone. You too. Thank you. Thank you.